Okay, what is our requirement? Our requirement is by using the tensor flow machine learning algorithm, otherwise like whatever the algorithms are there, उसका algorithm use करके हम W और B की वैल्यू ट्रेन करना चाहते हैं. हम लोग सिर्फ टेंसर फ्लो का इंट्रोडक्शन ही ले रहे हैं, न्यूरॉन्स वगैरह अभी कुछ यूज नहीं कर रहे. फाइन. सो मुझे सिर्फ ये देखना था हाउ दिस वेरिएबल विल वर्क, हाउ दिस कांस्टेंट विल वर्क एंड हाउ दिस प्लेस होल्डर विल वर्क. प्लेस होल्डर इन द सेंस जो यूजर से इनपुट लेगा. कांस्टेंट वैल्यू चेंज नहीं होगी. एंड व्हाट अबाउट द like what about this variable? तो वेरिएबल का वैल्यू ऑटोमेटिकली अपडेट होगा. दैट इज ट्रेनेबल डेटा और मशीन विल से. सो नाउ व्हाट इज अवर रिक्वायरमेंट? सेम इक्वेशन पे चलेंगे. y इक्वल टू wx प्लस b. लेट आई जस्ट रब दिस वन. इक्वेशन सेम होगा. y यहाँ पे हमने उसकी जगह लीनियर मॉडल लिखा था इज इक्वल्स टू w इंटू एक्स प्लस बी. ओके, w इंटू एक्स प्लस बी. अब इसमें हमारा x क्या है, w क्या है और b क्या है गाइस? व्हाट इज x क्या चीज होगी? x इज नथिंग बट ए प्लेस होल्डर. इनपुट, यस, प्लेस होल्डर. ठीक है. एंड व्हाट अबाउट w एंड व्हाट अबाउट b? ये दोनों क्या होंगे? जो ट्रेनेबल होने चाहिए. दैट मींस वेरिएबल. वो ट्रेनेबल होने चाहिए. दैट मींस इट कैन बी वेरिएबल. ठीक है. मैं इतना एग्जांपल इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये वर्ड से फैमिलियर होना है. अगर आगे जाके आपको पता होना चाहिए कि लाइक अगर कोई मॉडल दिया हुआ है तो उसमें ट्रेनेबल क्या है, तो उसको कैसे डेवलप करें, वेरिएबल, प्लेस होल्डर या कांस्टेंट. सो फाइन. सो दिस विल बी द सम रिलेशन बिटवीन दिस. तो हम लोग पहले ऐसा रिलेशन बनाएंगे. वी विल जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ दिस एक्स, बाई की वैल्यू, इन शॉर्ट लीनियर मॉडल की वैल्यू हम लोग प्रेडिक्ट कराएंगे. ओके. एंड आफ्टर दिस, ये करने के बाद मुझे लॉस फंक्शन कैलकुलेट करना था. दिस इज माय फर्स्ट थिंग. ओके. तो लॉस फंक्शन के लिए गाइस हम लोगों ने क्या सोचा था? लॉस फंक्शन किस तरीके से होगा? सो लॉस फंक्शन is equals to like reduce sum in the sense min value. So whatever the number of values you have, so हम लोग यहाँ पे reduce sum ही लिखते थे. Okay, reduce sum in the bracket क्या आना चाहिए मेरे पास? like linear model minus y उसका square. Okay, square of that one. So that is the loss function. So that is the loss function. I just wanted to go here. So this is the loss function. So I hope this is clear. और यहाँ पे what is y? And this y is nothing but a placeholder. y placeholder होगा और वो मुझे x का वैल्यू, असल लॉस फंक्शन की वैल्यू प्रेडिक्ट करके, सॉरी लॉस फंक्शन की वैल्यू मुझे रिटर्न. ओके. सो दैट्स दैट. सो दिस विल बी सम रिलेशन. मुझे रिलेशन डेवलप करना हो तो कैसे डेवलप करेंगे? सो हियर w एंड x इज कनेक्टेड वाया लाइक इनटू. सो यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन होगी. ओके. सो हियर आई हैव इनटू साइन. जस्ट रिमूव दिस. एंड जो भी उसका रिजल्टेंट आंसर आएगा, वो b के साथ कनेक्टेड होगा. So here we have a b and the answer will be actually plus के साथ कनेक्टेड होगा. ओके, प्लस के थ्रू कनेक्टेड होगा. सो हियर इट इज. सो ये जो हमारा आंसर आने वाला है उसको हमने लीनियर मॉडल बोला. ये जो आंसर आ रहा है दैट इज एक्चुअली नोन एज लीनियर मॉडल. नाउ इसको लॉस फंक्शन के साथ कनेक्ट करना है. तो इट विल बी लाइक यहाँ पे मेरे पास एक स्क्वायर जनरेट होने वाला है बनने का. तो हियर आई विल हैव माइनस. जो भी सब्सट्रैक्शन आएगा, यहाँ पे कलर इसलिए चेंज कर रहा हूँ बिकॉज डेटा आप चेंज कर रहे हैं. ठीक है. एंड हियर आई विल हैव एक्चुअली दिस इज y. ओके. सो लीनियर मॉडल था, अब ये मेरा y जनरेट हुआ, तो ये मेरा सब्सट्रैक्शन हुआ. अब मुझे उसका स्क्वायर करना है. ओके, उसका स्क्वायर करना है. बट अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली स्क्वायर कर रहे हैं. यहाँ पे कोई अलग सा वेरिएबल नहीं है, बट हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं. इट्स स्क्वायर ऑफ दैट. स्क्वायर करने के बाद उसका सम करेंगे, रिड्यूस सम. सो वी विल हैव लाइक दिस. एंड दिस इज द फाइनल आंसर दैट इज नथिंग बट लॉस. तो मुझे लॉस को मिनिमाइज करना है. एट एनी हाउ मुझे इस लॉस को मिनिमाइज करना है.
ओके तो मैं फाइनली रन तो इसको ही करूंगा, मैं फाइनली रन तो इस लो सॉरी नॉट दिस वन, मैं फाइनली रन तो इसको ही करूंगा। भाई लॉस को मिनिमाइज करना है एंड फॉर दैट व्हाट आई कैन डू, मैं यहाँ पे x की वैल्यू इनपुट करने वाला हूँ। ओके y की वैल्यू मैं इनपुट करूंगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। सो x की वैल्यू मैं यहाँ से इनपुट कर रहा हूँ, लेट आई से 1 2 3 4 and let us just input the value of y. This is actually x in the sense it is a feature value, and you can say that y is nothing but actually labeled value. So ये दोनों मैं वैल्यू इनपुट करूंगा एंड मुझे एनी हाउ मुझे ये लॉस फंक्शन को या तो आउटपुट लॉस को मुझे मिनिमाइज करना है। So our like TensorFlow model having only a single option, and that option is just update the value of this w and just update the value of this b. कैसे भी करके w और b को अपडेट करिए और लॉस फंक्शन की वैल्यू मिनिमाइज करिए। तो उसको बताना तो पड़ेगा ना भाई मुझे इन दोनों को अपडेट करवाना है। सो दैट हमने w और b को कैसे डिक्लेयर किया था, वी जस्ट डिक्लेयर दैट वन एज अ वैल्यू। ओके w और b को हमने एज अ वेरिएबल डिक्लेयर किया। सो नाउ our like TensorFlow model understood, okay मुझे इस बंदों को ट्रेन करना है, मुझे इन दो बंदों को w एंड b को मुझे अपडेट करना है। x एंड b को हम अपडेट नहीं कर सकते बिकॉज हमने पहले से नोटिफाई किया था, दिस आर द ए प्लेस होल्डर। सो लेट मी स्टार्ट। सो आवर फर्स्ट सिंपलेस्ट TensorFlow मॉडल एंड दैट इज एक्चुअली लाइक लीनियर रिग्रेशन मॉडल। स्टिल हम लोग को लीनियर रिग्रेशन नहीं पता, बट लेट मी जस्ट गो विद दैट, इट्स क्वाइट सिंपल। सो गाइस हियर आई एम यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजर। सो ग्रेडियंट डिसेंट आपको थोड़ा पता है, ग्रेडियंट डिसेंट मतलब वो एरर सरफेस के साथ हमने वर्क किया था। So we are using that gradient descent optimizer. That's actually TensorFlow model with the learning rate 0.0. Okay, that's the eta value with the learning rate 0.0. So मैंने उसका नाम रखा optimizer. Okay, अब optimizer को हम हमारा loss function देंगे। Okay, optimizer को हम हमारा loss function देने वाले। So we just write down optimizer dot minimize this loss. आगे हम लोग loss वगैरह ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। Okay, so optimizer dot minimize this loss. So that is my training mode. That is my training mode. And here I just reinitialize this init. Init मतलब क्या? What is that init? That is global initializer variable. Okay, what is that init? It's nothing but a global initializer variable. Line number 39. Line number 39. Just check this. Init is equals to tf dot global variable initializer. उसको मैं reinitialize कर रहा हूँ. Reinitialize करने का मतलब क्या हुआ? जो भी मैंने variables बनाए थे line number 38 में वो reinitialize हो जाएंगे with the value 0.3 and minus 0.3 and minus 0.3. Let me just come to the topic once again. So gradient descent optimizer use किया हमने and finally global उसको बोला minimize करिए, किसको minimize करिए, loss function. What is that loss function? This is the heredity. ये कुछ loss function था हमारा। Okay, इसको minimize करना है, then automatically it will tune like the values of, it will just train the value of w and p. By default value क्या था guys? By default value is 0.3 and minus 0.3. 0.3 and minus 0.3. Okay. Now like session dot run init हमने reinitialize कर दिया and finally मैं like 1000 times like outer loop iterate कर रहा हूँ। Okay, जैसे हम लोग को एक बार perceptron algorithm याद करिए। perceptron algorithm में हमारे पास दो लूप थे, एक outer loop और एक inner loop। outer loop में हम लोग 1000 टाइम अदरवाइज कोई एक error rate तक हम लोग उसको रिपीट करते जा रहे थे and inner loop में हम लोग weights को अपडेट करते थे। Okay, inner loop में हम लोग weights को अपडेट करते थे। So I just execute the outer loop for 1000 times. When outer loop को 1000 times execute किया, and we just write down session dot run, and here our training model is there. What is the training? That's our target. The target is actually minimize this loss function. Minimize this loss function. That is our target. Okay, that is our target. And here we just tune two values, x value and y value. We just tuned two values, x that is 1 2 3 4 as we discussed. 1 2 3 4 for x and y that is 0 minus 1 minus 2. So हमने actually fitting dictionary pattern use किया and finally हम लोगों ने w और b को print किया. Just take the value of w and b. The value of w is 0.99 minus 0.99 and like value of b is actually 0.99999. So approximately you can say that this is near about minus 0.1. This is near about 1. Okay, that is sorry not 0.1 minus 1 and this is near about 1. Okay, so अगर आप यहाँ loss function की value भी print कर सकते हो as per your requirement, आप loss function को भी print कर सकते हो। एक बार line number 42 को check करते हैं। जब हमने w का value -1 and b का value 1 रखा था, at that time loss was 0 and at that time loss is 0. Okay, तो अब हमारे पास w और b का value क्या आया guys? w और b का value मुझे मिला -0.99 and 0.99. So we can do one thing, we can just copy this line
once again हम loss function को value check कर सकते हैं कि अब loss function की value क्या आ रही है. We can just print this. Okay, right now the error is there because बाकी सब programs मुझे run करने पड़ते. Okay, बाकी सब lines execute करने पड़ते. So 1 minute guys. So is this clear? I hope ये समझ में तो आया ही होगा. Yes sir. Fine. एक मिनट है, एक कुछ टेंसर फ्लो वाला रन हो जाए. फाइन, ये फंक्शन मुझे रन नहीं करना है. ये भी एग्जीक्यूट नहीं करना है. सेशन कहाँ बनाया था हमने? नोड 1 इज नॉट डिफाइंड. प्लीज 1 मिनट, मैं एक बार उसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ तो हम लोग को आउटपुट एग्जिट पता चल जाएगा. सिचुएशन भी है तो एग्जीक्यूट. लोकल इनिशियलाइजर हमने रन कर दिया, इसकी जरूरत नहीं है. एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है. फाइन, ये हमारा फाइनल. सो लॉस इज नॉट डिफाइंड. वेयर इज द लॉस फंक्शन? ठीक है. So by default loss was 23.66. Okay, now let me just check. So here the loss is actually 5.6, but आप देख सकते हो एक्सपोनेंट मेंटिसा फॉर्मेट में दिया e is to minus 11. मतलब 0 के बाद 11 पॉइंट के बाद 11 zeros then 5. So approximate 100% accurate model. This is nothing but a 100% accurate model. So I hope this is clear. So what is variable, what is constant, what is placeholder? And here what I did, मैंने पूरा का पूरा फंक्शन मतलब जैसे इंडिविजुअल स्टेप्स की जगह पूरा एक साथ लिख दिया है. So that's it. So in one shot you can just execute this. And here we just print the loss function. Loss also we just print. So that is 5.699 e raised to minus 11.